Just a minute, अभी शुरू करते हैं जी। तो कल हम बात कर रहे थे लाइम पे और लाइम के यूजेस पर। हमने ये किया था कि लाइमस्टोन लिया था और जो कि CaCO3 है उसको हमने हीट किया था तो उससे हमारे पास CO कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम लाइम बुलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था। अच्छा, क्लास चूंकि अब्रप्टली एंड हुई तो इसलिए कोई एक दो चीजें मैं कल नहीं बता सका, वो आज नोट कर लें, ठीक है। What you're going to do, and I'm going to write that for you. At the bottom of this, you're supposed to write limestone because this is known as limestone. Okay, and here you're supposed to write, just a second, lime slash quicklime. So this is what we know them from. We know them by these names. CaCO3 is commonly known as limestone, and CO is commonly known as lime or quicklime. Both the names are also written in the text, but sometimes we do tend to forget it or we do not use the common names. Hence, it's important that you write it on the book. So write these words on the book, right? Moving on, lime is used in agriculture to neutralize acidic soils. हमारे पास जो सॉइल एसिडिक होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लाइम इस्तेमाल करते हैं। लाइम जो होता है वो चूंकि अल्कलाइन नेचर होता है तो ये अपना अल्कलाइन नेचर की वजह से सॉइल को एसिडिटी से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ी थी और इसको फिर हमने रिपीट किया स्लाइटली चैप्टर नंबर 7 में। हम इसे इम्प्रूव करते हैं ड्रेनेज इन सॉइल से, सॉइल के लिए जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले होता है, ठीक है। उसके अंदर ड्रेनेज भी इम्प्रूव होता है। ड्रेनेज से मुराद वाटर का पास करना है फ्रॉम द अपर लेवल ऑफ सॉइल टू द लोअर लेवल ऑफ सॉइल. That way water will be able to take up minerals and the fertilizers that we throw into the soil all the way to the roots of the plants, and then the roots of the plants will be able to use up those nutrients for their own growth. All right. So it is also used with sodium carbonate and sand in making glass. As much astonishing as it may sound, glass जो है वो हम रेत से बनाते हैं. A big portion of glass is sand, sodium carbonate and limestone. ठीक है, तो इन तीनों चीजों को रिएक्ट करके हम ग्लास इंडस्ट्री बनाते हैं. लाइमस्टोन की इंडस्ट्री में जहां हमने सीमेंट को डिटेल में पढ़ा है, लाइम को डिटेल में पढ़ा है, वहां भी हमने ग्लास को भी डिटेल में पढ़ना है. But we'll do that on the next page. For now, large amounts of lime are converted into slaked lime, hydrated lime. हम ये कहते हैं कि लाइम के अंदर या कुछ लाइम के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उसे हम स्लेक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बुलाते हैं. उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बुलाते हैं. All three names are for the same formula, CaOH twice. We are familiar with that because we used that back in chapter number 4, 5 and 7. ठीक है, 5 में हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा है. इक्वल अमाउंट्स लाइम की और वाटर की मिक्स की जाती हैं ताकि ये मटेरियल प्रोड्यूस किया जा सके. इसे ब्लीचिंग पाउडर पे भी यूज करते हैं, इसे ग्लास फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसे और भी हम डिफरेंट पर्पसेस, फॉर एग्जांपल जस्ट सेकंड, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इट इज मिक्स विद सैंड टू गिव मोर्टार. हम इसे सैंड से मिक्स करके मोर्टार बनाते हैं. मोर्टार क्या है? जब तक हमारे पास सीमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो वो मिक्सचर जिससे हम अपना सारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते थे और स्पेशली उसे पेस्ट के तौर पे यूज करते थे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द ब्रिक्स स्टिक टुगेदर. क्योंकि बिल्डिंग जो होती है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक्स होती है, ईंटें होती हैं, तो उनको आपस में जोड़े रखने के लिए, उन्हें आपस में फॉर्म में रखने के लिए हम मोर्टार यूज किया करते थे. मोर्टार क्ले और सीमेंट का मिक्सचर था. उस मिक्सचर को जब हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो हमने उसे सीमेंट बुलाया. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मोर्टार एंड सीमेंट. ठीक है, ये मिक्स किया जाता था वाटर के साथ और फिर अलाउ किया जाता था टू ड्राई. मोर्टार सेट कर देता था स्ट्रांगली बॉन्डेड मटेरियल में जो कि फिर बाद में ब्रिक्स को अच्छी तरह से आपस में होल्ड कर सकता था. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, सही है. इस रिएक्शन को भी हम चूज कर सकते हैं. ये जो रिएक्शन है ये
मे बी आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 5 में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 5 में प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, पॉइंट 1 और 2। हमने पॉइंट 2 की एग्जांपल में ये रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो अगर आप इस हिंट को देखना चाहें तो बेशक टेक अ मिनट, वापस जाएं पेज नंबर चैप्टर नंबर 5 में प्रेसिपिटेशन में। इनफैक्ट व्हाई डोंट वी टेल यू द पेज नंबर, ताकि उससे आपको वापस जाने में आसानी होगी। जस्ट सर 141 पेज नंबर है। थैंक यू सर 141। हाँ जी, थैंक यू। तो 141 पेज नंबर पे हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन है उसके अंदर हमारे पास एक ऑरेंज पोर्शन है। उस ऑरेंज पोर्शन में प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन है, या वाइट पोर्शन है जो भी है, ठीक है। उसमें उसकी की डेफिनेशन है, उसमें हमारे पास उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए मैंने आपके पास एक इक्वेशन एज एन एग्जांपल लिखवाई है, व्हेन अ गैस इज बबल्ड इनटू अ सॉल्यूशन। उसमें आपके पास इक्वेशन लिखी होगी CaOH ट्वाइस, ठीक है। उसे हम गैस पास करेंगे CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास CaCO3 प्लस H2O बन रहा होगा। CaCO3 के साथ आपने डाउनवर्ड एरो ड्रॉ किया होगा, या नीचे आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट मेंशन किया होगा। दोनों में से कोई भी काम किया जा सकता, दोनों भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल है जो हमने पहले भी चैप्टर नंबर 5 में भी की हुई है, और अब दोबारा उस एग्जांपल को वो चैप्टर नंबर 9 में पिक कर रहा है। आई होप दैट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, इज इट? और डू वी हैव अ क्वेश्चन? मिल्की प्रेसिपिटेट नहीं किया था हमने? हाँ, मिल्की प्रेसिपिटेट, यस। उसे व्हाइट भी, उसे मिल्की से भी शो कर देते हैं। It means the same thing because the precipitates in milk are of white color. So milky precipitate or white precipitate, or sometimes cloudy appearance is also used for those words. हमने दोनों तीनों explain किए हैं, ठीक है? वो chapter 5 में किए हुए हैं, इस जगह पे तो exactly नहीं किए होंगे, इससे थोड़ा सा पीछे किए होंगे। वापस आ जाएं chapter 9 पर। chapter 5 में से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ये point समझ आता है सबको? Alright, good. So let me just come back to the page. So this concludes the page, and this concludes about lime. But yet I told you we are left with one industry, ठीक है। और वो इंडस्ट्री जिस तरह मैंने भी क्लियर किया कि हमने काफ़ी कुछ स्टडी करना था लाइमस्टोन में। हमें लाइमस्टोन को, लाइम की यूसेजेस को, सीमेंट इंडस्ट्री को, इटसेल्फ लाइम इंडस्ट्री को, और लास्टली हमने वाटर कह रहा हूँ, ग्लास इंडस्ट्री को स्टडी करना था, ठीक है। सो कमिंग टू ग्लास इंडस्ट्री, मेकिंग ग्लास. Making glass is a part of supplement portion, and it is important that we go through this diagram and you know the details of this diagram. All right, so सिर्फ डायग्राम ही है इसमें? yes, just the diagram, that's about it. ठीक है, इससे क्वेश्चंस पास्ट पेपर में ना होने के बराबर है, इसलिए हम इतनी ही इंपॉर्टेंस तक इसे रखते हैं. So take a look. The reactants are crushed limestone, sand, and soda, which we commonly call sodium carbonate. Okay, and they are mixed together, then heated into a hot furnace, and that hot glass, which is actually a running liquid, is formed into shapes, and then those shapes are cooled down so that we can get the glass in our required shapes. Okay, that's about it. The major thing you are going to memorize from this diagram are the name of reactants and the one step of the process using hot furnace, shaping, and cooling. Are we clear? Yes, sir. Good. The previous process, lime process, is also explained in the diagram. We studied the process that we take in some limestone, we heat it up, we convert it into lime and carbon dioxide, in which we use the lime for many different processes, such as glass, such as cement, such as other purposes, but the carbon dioxide is given out. The same rotary kiln is shown over here, and you can see that the kiln is over here. It is a tilted kiln,
It rotates over its own axis. Limestone is sent from the left-hand side as an inward lens uh, and is taken out from the other side. Limestone goes in, quicklime comes out. Hot air comes from the opposite direction. Hot air plus excess of carbon dioxide, which is produced by this reaction, goes out from the other side. The temperature increases as the limestone travels through the kiln, so to make sure that all of the limestone has been converted into quicklime. So yes, if the temperature is appropriate, approximately 98 to 99% of the limestone is converted into quicklime. Are we clear? Yes, sir. The process was discussed on the previous page, and the diagram is here. Now, an important study tip. Please make sure that you mark it. It's very important. Remember, the reaction involved in this process, production of lime, is an example of thermal decomposition, a decomposition completely based upon heat, hence thermal decomposition. Calcium carbonate is not reacting with anything. It is simply breaking up into simpler substances, but because of high temperature, when you write the equation, do not try to include anything else on the left-hand side of the equation because there is only one reactant, and thermal decomposition tend to have one reactant but more than one products. Thermal decomposition is always endothermic. The second thing that you might want to write it over here. Thermal decomposition is always endothermic. स्टडी टिप के नीचे Right? Because thermal decomposition requires intense pressure. Hence, endothermic. Thermal decomposition is always endothermic. There are a few exceptions to this rule, but not at the level of O levels. At higher levels, we discuss a couple of exceptions to this rule. But for now, this rule is considered correct and given complete marks in exams. This concludes our topic of limestone. Let's move on to the next topic. Not only the topic, we are going to hopefully finish up this chapter, if possible, today. The economics of chemical industry. Economics of chemical industry includes the discussion of finance for the chemical industry in terms of profit, in terms of money, considering all the factors that are required for a chemical plant. So what are the factors that are required for a chemical plant? The factors are given in the bullet points over here. Let's go through the factors. If the raw material is available needed by the process, the chemical plant can be set up in a specific area. Number two, if the transport links for importing the raw materials and export of products are there, only then we can set up a plant over there. And by transport links, we mean if the roads are made, if there is a railway link over there, if there is a water-based link over there, if the ships can come and go, if the aircrafts can come and go from that place. So for an industry, these things are important. The more types of transportation links the industry has, the easier it is for the industry or cheaper it is for the industry to get the raw materials and to give out the products, ship out the products. That is importing of raw materials and exports of products. So the industries that are linked by road, by railway line, by air sources, and by water sources are considered the best, because they are connected by all four different most possible and most important transport links. Then comes the availability of a workforce, simply calling labor, the people who can work in the industry. Then the nearness of customers for the products. If the customers are near, they won't have to spend too much money in transporting that thing all the way to the market. If the market is near, that's a very good thing. Next and last is environmental considerations. We need to consider the environment. We need to make sure that we are not producing too much of pollution. When it comes to pollution, we'll discuss on the next page and the page after that what we need to do. Okay, they're going to discuss a few case studies in terms of UK, the alkali industry in Manchester, UK,
and the fertilizer industry in Burrup, Western Australia. Few examples are there, but it's not that important that we go through the case studies because case studies are not a part of O-level chemistry. सर हमने इनके नाम याद करने हैं? नाम किन के? मतलब सर एग्जांपल जैसे No. I'm speaking the entire part. वगैरह। I'm speaking taking that entire part as a whole. So no need. So let's come to the environmental costs of the industry. Okay. That is the important part. That's what we are going to discuss. It's mostly about pollution and it's mostly about the things that are students already aware of. If not, we'll discuss it today. We're gonna make sure we're all on the same page. Any factory that has an effect on its surrounding is considered as environmental costs of industry. In the case of chemical plants, the effects can be serious, the effects can be extremely dangerous or hazardous, or the effects can be simply very less. It depends upon the type of industry that we're going to talk about. There have been a number of accidents in previous different parts of the world in the previous history where something has gone wrong with disastrous results. So most chemical plants, however, run unsuccessfully without causing any great harm. The ways in which environment could be affected are as follows. Number one, the environment can be affected in terms of air pollution. We are all familiar with air pollution already. The pollution that is present in the gaseous part or the air part of the planet is known as air pollution. Acidic or poisonous gases are often produced in chemical process, and we take that as the biggest problem of air pollution. At one time, these gases were released into the atmosphere, causing health problems nearby, and acid rain further afield. Nowadays, gases have to be treated before they are released into the atmosphere to make sure anything is not harmful around and it is not giving any harm to the nearby living sources, whether they're animals or plants or people or marine environment, whatever that is. For example, acidic gases are removed by scrubbing. What was scrubbing? We studied scrubbing back in chapter number 5. I gave you a simple understanding phrase for scrubbing. Scrubbing is more like showering. Showers with water are there, and we don't just use water, we sometimes add an alkaline material to it so that when acidic gases are passing under those showers will neutralize the acidic effects and the waste gases are then released to the environment without having any acidic or alkaline effects. This concludes air pollution. If you have any question about air pollution, please ask now. All right. Pollution is usually easy. We have studied it a lot of times before in previous classes, so we can actually quickly go through this stuff. Water pollution. Liquid waste and cooling water from chemical plants for what at time released into the rivers. This caused a lot of pollution in the history. So industry slowly learned we're not going to do that. Okay. So now this waste must be treated first. Water boards and river authorities test the water leaving into chemical plants to make sure it is clean. And chemical companies receive large fines if they fail to stick to the rules. Very important. So if you're releasing any watery or liquid form of poisonous material or harmful material or acidic or alkaline material, you'll have to pay a large fine. Okay. In the countries where the rules are strict, not in a country like Pakistan. Okay. Unfortunately. सर सो वो जो एयर एसिडिक एयर को मतलब न्यूट्रलाइज करती है उसको डीसल्फ्राइजर कहते हैं। नहीं बेटा, डीसल्फ्राइजर सिर्फ एक एग्जांपल थी जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी, वो भी इस केस में कि सल्फर एनवायरनमेंट में ना जाए। लेकिन जब आप गैसेस को स्टॉप करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर से एसिडिक इफेक्ट या अल्कलाइन इफेक्ट खत्म करते हैं। डीसल्फराइजर जो था वो सल्फर को रिमूव करता था in the form of solid, not in the form of gases. If it's already converted into gases, we used a scrubber back in chapter number 5 and we're going to use a scrubber over here. याद रखिए, सॉलिड को और तरीके से रिमूव किया जाता है, लिक्विड को और तरीके से, और गैसेस को और तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ गैसेस की बात हो रही है, सॉलिड सल्फर की बात नहीं हो रही, तो हमने डीसल्फराइजर का तज़किरा नहीं किया, बल्कि हमने स्क्रबर यूज किया। Are we all clear?
Ayan? Yes, sir. Yes, Good, sir. Yes. good, good. So, poisonous metal compounds are removed by adding sodium hydroxide. Let's use the spotlight. There's too many words over here. For example, poisonous metal compounds are removed by adding sodium hydroxide, which removes the metal as precipitates, and precipitates can be easily filtered out. Those precipitates are sometimes used by industry, or those precipitates are collected and sometimes sold to the outside people so that they can separate those precipitates or use them for their own purposes. Okay, so we don't send any liquid material to nearby water sources, rivers, or lakes nowadays from industry. Okay, moving on. Land pollution, the third kind of pollution. Chemical processes often produce solid waste, which is used to be left in large spoil heaps. Now, that is too bad. That is something that our country is quite used of. Spoil heaps क्या होते हैं? गंद के ढेर. ये आपको रहीना खान में भी बड़ी जगहों पे चलते फिरते नजर आएंगे. आहिस्ता आहिस्ता हम ये चीज लर्न कर रहे हैं बीइंग ए नेशन कि ये जो गंद के बड़े बड़े ढेर हम खड़े कर देते हैं, इसकी बजाय हम इसे प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं. या अब चूंकि हमने वेस्ट इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी है, तो हमें अंदाजा हुआ कि हम दो काम कर सकते हैं. या तो हम वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट आफ्टर कपल ऑफ पैराग्राफ्स, या फिर हम उस वेस्ट को सिंपली बर्न करके या किसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फैक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं. और अब तो हर तरह का वेस्ट होता है वो ह्यूमन जो है ना positive consumption के लिए यूज होता है, not to be directly consumed but to be converted into a form of energy. अब हर तरह का वेस्ट हो रहा है. डोमेस्टिक वेस्ट में बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो रिसाइकिल हो जाती हैं, और जो टाइप्स रिसाइकिल नहीं हो सकती उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. नॉट जस्ट दैट, poultry waste, feedstock waste, industry waste, ठीक है, even human waste is now used nowadays used for different purposes. ठीक है, तो हर तरह का वेस्ट जो है वो हम प्रॉपर्ली यूज कर देते हैं. विलेजेस में फीडस्टॉक वेस्ट होता है यानी एनिमल वेस्ट होता है, अब हमने उससे बायोगैस बनाना शुरू कर दिया है, और वो जो बायोगैस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, गैसियस पर्पस के लिए डायरेक्टली यूज करने के भी काम आती है. सो एक्चुअली वी आर नाउ understanding how to use waste to our own good instead of just leaving it out there in the form of big heaps and bigger blocks. We're going to also discuss about that at the end of this chapter. Okay? These often contain poisonous substances. Most countries in the world still have areas of land where it is not safe to live because of poisons in the ground. Okay? When we talk about poisons in the ground, unfortunately, Asia is the worst. Among the Asia, few portions of three largest countries according to population are the worst. On top, India, second number, China, third number, Pakistan. मैं सारे कंट्री को बुरा नहीं कहता बेटा, ये हरगिज मत परसेप्शन में लीजिएगा, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ रहना, सिर्फ रहना, यानी जैसे रहीमा खान में रह रहे हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ रहना और उसका अंडरग्राउंड वाटर किसी भी पर्पस के लिए यूज करना पॉइजनस होता है. इफ नॉट डायरेक्ट पॉइजन, अ स्लो पॉइजन. जैसे रहीमा खान के पानी में आहिस्ता आहिस्ता आर्सेनिक की मिकदार इतनी बढ़ती जा रही है कि रहीमा खान का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्लो पॉइजन में कन्वर्ट हो रहा है. इट वाज कंसिडर्ड कि रहीमा खान का जो पानी है उसको इस्तेमाल के काबिल हम नहीं रख सकेंगे 2010 के बाद से, और ऐसा ही हुआ. आप देखेंगे 2010 के बाद से या 2015 के बाद से शहर के ज्यादातर इलाके, more than 60 to 70% of the underground water of the city is not directly drinkable. अब क्या है, आप नोटिस करते होंगे कि आपके घरों में पानी जमीन से निकाल कर नहीं पिया जाता होगा, बल्कि पानी खरीदा जाता होगा, पानी किसी आउटसाइड सोर्स से आता होगा. यहाँ पे बैठे हुए 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो किसी आउटसाइड सोर्स से बॉटल्ड वाटर या कोई इस तरह की सोर्स लेकर यूज कर रहे होंगे. या अगर बॉटल्ड वाटर नहीं भी यूज कर रहे होंगे तो अपना अंडरग्राउंड वाटर निकाल के घरों में खुद फिल्टर लगाए होंगे, पहले उसे फिल्टर कर रहे होंगे, फिर उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे होंगे. अगर मैं आप सारों से पूछूं क्या बेटा आपके घरों में ऐसा ही है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स और मोर वुड से यस टू इट. इज दैट? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बगैर किसी फिल्ट्रेशन के या बगैर खरीदे पानी, जमीन का पानी लेकर पी रहा हो? अगर कोई है तो बताएं.
See, it would be hardly one student or none. So that's 90% or more. After 2020, it was supposed कि ये जो arsenic है ये ना सिर्फ water को drinkable बनाएगी बल्कि ये 2020 से 2030 के दरमियान रहीमा खान के different हिस्सों में slow poisoning का बायस बनना शुरू हो जाएगी. And 2020 has already started. It's just a matter of time before the underground water will become a source of slow poisoning. And that is actually true. हमारे पास गरीब लोग जो पानी खरीद कर नहीं पी सकते वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों में किडनी प्रॉब्लम्स में स्टोन में गॉल ब्लैडर स्टोन्स में के प्रॉब्लम्स में लिवर स्टोन के प्रॉब्लम्स में ये हर कोई तो पानी खरीद कर नहीं पी सकता ना गरीब के पास तो खाने के पैसे नहीं पानी कहाँ से खरीदेगा तो वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं which is a very big problem because in case of Pakistan poverty इतनी है कि हमारे पास approximately किसी areas में 40% और किसी areas में up to 60% people are not able to buy water. They have to go through the drinking water process. और ऐसा कर रहे हैं लोग कर रहे हैं ठीक so ये चीज बहुत important है जी फिर साफ पानी कहाँ से आता है वो वाला कौन सा साफ पानी बेटा जो हम पी रहे हैं सर पाकिस्तान में है मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बेटा रहीमा खान में इतने लगे हुए हैं घरों में लगे होते हैं लोगों के तो वो तो फिल्टर होता है ना मैं समझा नहीं आप किस प्लांट की बात कर रहे हैं क्या फिल्टर करना काफी नहीं है पानी को साफ पानी बनाने के पीने के लिए आप किसकी बात कर रहे हैं नौसो ये साफ पानी आता है कहाँ से बेटा हम गंदे पानी को लेकर उससे बाकायदा साफ करते हैं फिल्ट्रेशन के जरिए साफ पानी कहीं से नहीं आ रहा आप यही वाला अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं आप इसे फिल्टर कर रहे हैं इसका पॉइजनस मटेरियल फिल्ट्रेशन में पीछे रह जाता है और जो है ना आपके पास साफ पानी आ जाता है आप वो पानी पी लेते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैसे क्या होता है कि वो फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन जो होता है वो फिल्टर्ड पॉइजनस सॉलिड सब्सटेंसेस को रोक रोक के आहिस्ता आहिस्ता क्लॉग हो जाता है क्योंकि वो नेट पे स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली मैश होता है जो उसे स्टॉप कर रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता वो क्लॉग होना शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि आपके जो सिंपल घर पे फिल्टर्स लगे हुए हैं उसमें 3 तरह का 3 स्टेप फिल्टर होता है एक जो होता है 1 महीने बाद रिन्यू होता है आप मार्केट जाते हैं पुराना फिल्टर बेच देते हैं नया फिल्टर ले आते हैं घर ला के लगा लेते हैं उसमें से सेकंड फिल्टर जो होता है वो 3 मंथ्स के बाद और थर्ड फिल्टर जो होता है वो 6 मंथ्स के बाद रिन्यू हो जाता है और वो जो आप पुराने फिल्टर देख कर आते हैं उन्हें दोबारा खोला जाता है उन्हें साफ किया जाता है वॉश किया जाता है रिन्यू किया जाता है विद सॉल्ट वाटर एंड अदर केमिकल्स और उसे दोबारा रेडी करके फिर रीसेल के लिए निकाल लिया जाता है और उसका जितना मटेरियल होता है वो सारा इकट्ठा करके डिस्पोज कर दिया जाता है वो फिर दोबारा ग्राउंड में डाल दिया जाता है वो फिर पॉइजन बन जाता है तो एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम अपना ग्राउंड वाटर सिर्फ वक्ती तौर पर साफ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर तब तक नेचुरली क्लियर नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो वर्ल्ड वाइड परसेंटेज को क्रॉस नहीं करेगी वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट परसेंटेज यानी कि पूरी दुनिया में दरख्तों की मिकदार किसी भी इलाके के हिसाब से कम 8% होनी चाहिए रहीमा खान अनफॉर्चुनेटली 1.5% से भी कम है which we call a dry city ठीक है अगर वो मिनिमम 8% को क्रॉस करेगा और 16% को क्रॉस कर जाएगा तो दरख्त ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड वाटर को इन अ पीरियड ऑफ 3 to 5 इयर्स फिल्टर कर देंगे और जमीन का पानी साफ होना शुरू हो जाएगा फिर भी अंडरग्राउंड वाटर निकाल के पिए ना करें फिल्टर देखिए हमने नेचुरल फिल्टर तो काट के फेंक दिए तो आर्टिफिशियल फिल्टर ही लगाएंगे ना जी पूछिए तो फिर से ये हम जब पानी को फिल्टर कर लेते हैं तो हमें जो महंगे मिनरल वाटर के नाम से बाजारों में मिलते हैं बोतलें से उसमें क्या फर्क होता है फिर फिल्टर पानी में उसमें वेरी गुड पॉइंट देखिए अल्लाह ताला ने जो नेचुरल पानी दिया है ना वो प्योर नहीं है लेट मी टेल यू ओनली द ग्लेशियर वाटर द स्नो on the different parts of the planet and the rainwater after the first 15 minutes of rain is pure water the rest is all a mixture the rest is a mixture of natural salts present in water which was essential for animal bird human and plant health वो तमाम मिनरल्स अल्लाह ताला ने उसके अंदर नेचुरली डाले हुए थे NaCl, MgCl, KBr, KCl बहुत सारी चीजें मैग्नीशियम salts, कैल्शियम salts, सोडियम salts और पोटेशियम salts on top of the list ठीक है और अल्लाह ताला ने पहले से मिक्स किए हुए थे
अब हम क्या करते हैं, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं ये सॉल्ट भी चले जाते हैं, तो जो घरों में पानी आता है वो प्योर वाटर होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के अंदर वो सॉल्ट्स भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन लोगों में देखा होगा कि जो घरों में प्योर वाटर पी रहे हैं, बिल्कुल बेजायका पानी, ठीक है, नंबर एक, जब वो बॉटल वाटर पीते हैं नेस्ले वगैरह का, जो कि मिनरल वाटर है जिसमें वो सॉल्ट्स दोबारा ऐड की जाते हैं, मिनरल वाटर वाली कंपनी क्या करती है, सारा पानी साफ करती है, अब उसमें से हर तरह के सॉल्ट निकल गए, तो नेचुरल अमाउंट जो सॉल्ट्स की होती है वो दोबारा उसके अंदर वापस डालती है, फिर उसे बेचती है। हेंस मिनरल वाटर। घरों में मिनरल वाटर नहीं होता, घरों में फिल्टर्ड वाटर होता है, उसमें सॉल्ट्स नहीं होते, लिहाजा हमारी बॉडी में सॉल्ट्स की कमी हो जाती है। तो वो सॉल्ट्स की कमी कहाँ से पूरी होती है, वो फिर खाने से पूरी होती है, खाने में नमकियात से पूरी होती है, ठीक है। लेकिन वो सॉल्ट्स फास्ट फूड में एग्जिस्ट नहीं करते, लिहाजा हमारे बच्चे ना सिर्फ मोटे होते हैं बल्कि मिनरल लेस लैक ऑफ मिनरल्स का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फास्ट फूड खाने के आदी हैं, और फास्ट फूड में मिनरल्स नहीं होते हैं। those minerals, those salts that I'm talking about is present in the natural diet, not in the over fried diet, ठीक। सो ये सारे ओके सर। प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं आपस में, ठीक। सो बहुत सारे एरिया सेफ नहीं है, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रीट किया जाता है, पहले हार्मलेस बनाया जाता है, फिर डिस्पोज किया जाता है सेफली। अपीयरेंस, क्वरिंग और माइनिंग जो होती है वो लैंड सराउंडिंग को एक बुरी हालत में लेकर जा सकती है, तो केमिकल प्लांट की जो लुक होती है वो वर्स होती है फॉर फेयर देखने के लिए और गंदी लगती है। तो अब केमिकल कंपनीज क्या करती हैं, जब एक जगह को इस्तेमाल कर लेती हैं इस प्रॉब्लम किसी भी पर्पस के लिए, माइनिंग के लिए, क्वरिंग के लिए, किसी और पर्पस के लिए, दोबारा रिस्टोर करती हैं उसके एनवायरनमेंट को कि उसे हरा भरा करें। ये देखें, एक इंडस्ट्री है, बगैर किसी दरख्त के आपको पूरी इंडस्ट्री में एक भी दरख्त नहीं नजर आता होगा, उन्होंने जगह का तहस नहस कर दिया, लेकिन उन्हें दोबारा उसको क्लीन करना है इससे पहले कि उस जगह को छोड़ें और वहां से उठ के किसी और जगह पर जाएं, इंडस्ट्री को मूव करें, राइट। अब इन सारी जो चार चीजें बताई गई, एनवायरनमेंट, इन पे कॉस्ट लगती है, ये आसान नहीं है, तो एनवायरनमेंट कॉस्ट इम्पोर्टेंट है प्लेनेट के हिसाब से, बेशक वो इम्पोर्टेंट ना हो, जो ना कहते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, इंडस्ट्री को सिर्फ कॉस्ट के तौर पर पड़ती हो, लेकिन प्लेनेट के हिसाब से वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब हमारे पास जो एक पॉइंट हमने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए रिसाइकलिंग का पढ़ना था, बस वो एक पॉइंट रहता है विच इज जस्ट नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसे हम कल करेंगे। आज वाले पोर्शन में से क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना लेक्चर हम इसके बाद खत्म कर देंगे, हम इससे आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे। सर क्वेश्चंस इसके कैसे आएंगे, मतलब लाइमस्टोन वाले कि कैसे बनता है, प्रोसेस बताएं। प्रोसेस, इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम कन्वर्जंस, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन को हम लाइम को क्विक लाइम में और क्विक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके दोबारा लाइमस्टोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। बाय द वे दैट प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर नंबर 1 व्हेन वी विल गेट टू चैप्टर नंबर 1, तो लाइम ज्यादा अच्छी तरह से तब क्लियर होगा। लाइम को आप कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 से प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ द पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग इन चैप्टर नंबर 1। ज्यादा सर इसमें पेपर 2 से आता है, पेपर 4? 9 में पेपर यस 2, सर। 4 और 6 तीनों शामिल हैं। इवन इसमें 6 से प्रैक्टिकल भी आ सकता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, मैंने खुद उसे इंटेंशनली रखा है। वेल पेपर 4 से 9 चैप्टर से पेपर 4 का क्वेश्चन जरूर बनता है, almost every alternative here, and that's very important because there is corrosion, there is steel industry, there is iron industry, there is aluminum industry, there is fertilizer industry, then sulfur and sulfuric acid industry, there is lime industry, then there is lastly these pollution and recycling points। तो बहुत इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से क्वेश्चन हर साल आता है उनमें से। कोई भी इंडस्ट्री पे करके दे सकते हैं, इतनी ढेर सारी तो पड़ी इक्वेशन से भरी हुई है, प्रोसेसेस से भरी हुई है, प्रोसेसेस कंडीशन से भरी हुई है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट्स। एक प्रोसेस, उसकी इक्वेशंस, उसकी कंडीशन या उसकी प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, ये कॉमन तरतीब होती है चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस में पेपर 4 के लिए। पास पेपर्स देखें, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक। वरना जब हम अपनी बुक रिवीजन कर रहे होंगे तब मैं पास पेपर और पेपर क्वेश्चंस आपको खुद दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो फार ऐसा करते हैं कि पहले कोर्स को खत्म करते हैं, ठीक। अ फ्यू सेकंड्स आर रिमेनिंग, कॉल ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तो उससे पहले मैं खुद एंड कर रहा हूं, और कोई क्वेश्चन रह जाए तो कल पूछना।
ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाभ